Assalamualaikum students. Now we are going to solve exercise 1.3 type 4 in our today lecture type 4. There are three questions of type 4, 12, 13 and 14, and question number 13 I'm going to solve for you. So 12 and 14 and we will solve with the help of assignment also. Okay, so such type of the equations, when x is coming as a exponent, when x is coming as a exponent, then such type of the equation is called exponential equation. What is called? Exponential equation. Good. So in this, there is the fourth type of 1.3 exercise. So there are total three questions, and now we'll check how to solve. First of all, what is the meaning of this dot? Good. It's not a decimal point, it's a sign of multiplication. So we have to write it as a multiplication sign and its exponent separate, then able to help to solution. 4 multiplied by 2, its exponent 2x. As I told you before, when the base is same, then exponent add. So same way we have to make it separate. How? Like 2x plus 1, so I can able to write its power 2. Why? Because base is same. So when we will combine, then we can able to write 2 exponent 2x plus 1. And here minus 9 multiplied by 2 exponent x and plus 1 equal to 0. Right? Why we need to do this one? Actually, I want to assume the value. If I was assuming here 2 exponent x is equal to y, so here first of all I make the difference of the square of the both exponent. Mean here exponent power is 1x, and here I need only 2x with same base. That's why I do like this. But first I want to simplify one more step. This 4 and 2 can possible to multiply, so I can able to write 8 x multiply 2 exponent 2x minus 9 multiply 2 exponent x plus 1 equal to 0. Right? That is equation number 1. After that, we have to assume. But we will assume that let this number is a small number, so this number I assume that as a y. So let 2 exponent x is equal to y. So when I am taking squaring, so 2 exponent 2x is equal to y square. Squaring, so 2 exponent 2x is equal to y square. So this is equation number 1 and this is equation number 2. That is equation number 3. Same, put equation 2 and 3 in equation 1. Good. Because we want to make it a quadratic. So 8 here exponent 2x, and the relation between them is multiplication. So how to write this one? 8y square, because no need to sign of multiplication when there is no sign between the variable and the coefficient, so it means that they are multiplying. So here what we will write here? Minus 9 y, because 2 exponent x is equal to y, so we will put its value, and plus 1 will remain same. So what is this? Mean this, which type of this equation? Yes, quadratic equation. Variable y. करेंगे हम क्या? First of all we have to find out the value of y. After finding the value of y, we will again come to equation number 2 to find the value of x. So let's check, is it possible to solve with the help of the factorization method? So
if we will multiply first and the last term, mean coefficient of y square and the constant, then we will get the product. What's product is that? 8 ones are 8, good, and that is a positive. It means that sum करने से ही आएगा. और central term -9. What are the factors? Factors बनते हैं इसके. जल्दी से hurry up. 8 ones are 8, good. 8 ones are 8 and ऐड करने पे 8 प्लस 1 करें तो हमारे पास क्या आता है? वो तो हमारे पास पॉजिटिव 9 आता है. सो व्हाट्स चेंज? नेगेटिव साइन. किसके साथ? दोनों के साथ. गुड. इधर भी और इधर भी माइनस लगा देंगे तो हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस. 8 ones are 8, -8 and -1 -9. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं. It means that what we will do, that we can change the central term into two parts, and one part is -8y and second is -y. Good. Okay. 8y square. The first term will remain same. In the place of second term, we have to write the two terms. Variable को change नहीं करना हमने. Variable will be remain same y. So -8 y and -y. Because 1 is no need to write 1, because how many y is here? 1 y. So there is no need to write 1. So the last term is also remain same. Plus 1. There are total 4 terms. When make the factors 3 to 4 terms it's make. So how many pairs? 2 pairs. Good. That is the first pair and its second pair. Okay. What's common in the first pair? Yes. Good. 8y. Is the common in the first pair. So what's remaining inside the bracket? Y minus 8y पूरा बाहर आया हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1. Good. And here, what is common in the second pair? Nothing. It means that when there is no number is common, means special number is common. So what we will write that? 1. So we will take minus here, -1. So what we will write it here? Y plus 1 equal to 0. Is it right? No. So what's mistake? Yes? Minus. Good. Why? Because whenever the negative sign before the bracket, so inside the bracket sign will be changed, so it's y minus 1, and you are absolutely correct. Inside the bracket, both brackets are same. Good. So y minus 1 we will take common. Y minus 1 taking common here and here. Also what's remaining here? 8y minus 1 equal to 0. Okay. So there are two possibilities. First possibility, what is that? Y minus 1 equal to 0, and second is that 8y minus 1 equal to 0. We have to find out the values of y is equal to simplify. If more simplify, it will become like that. Y is equal to 1, and here y is equal to, first going 1 other side and divided by 8. Is it finished? No. Okay. Why? What's remaining here? Yes. Good. We have to put the value of y, because the question is in the form of x variable, so we have to find the value of x. And how to find the value of x? With the help of equation 2, we will put the value of y, then we will able to find the value of x. So put the value of y from equation 2. You can write it here. Put the value of y from equation 2, ताकि पता चले y तो कहीं जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो पता चला y की कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं from equation number 2. So here 2 exponent x is equal to 1. It means that we have to find the value of x. X is as an exponent, and how to solve? Listen carefully.
द बेस मस्ट बी सेम, क्योंकि x आपके पास एक्सपोनेंट में है तो यहां पे भी आंसर एक्सपोनेंट में ही आएगा. एंड हुज एक्सपोनेंट दैट वन विद द सेम बेस 2. ऐसा नंबर ढूंढो 2 का एक्सपोनेंट जिसका आंसर 1 आता हो. यू हैव टू फाइंड आउट अ नंबर दैट हुज दैट पावर ऑफ 2 इज इक्वल टू 1. क्या ऐसा नंबर? इट मींस दैट हमें यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है 2 एक्सपोनेंट x तो इट्स कंपल्सरी इधर 2 आएगा. आफ्टर दैट इट्स एक्सपोनेंट मेक सेम. लेकिन ये तो 2 है, हमें ये 1 चाहिए. 2 की क्या पावर पुट करें कि आंसर 1 आ जाए? यस, गुड, 0. इट मींस दैट किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए या किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 हो, सो इट्स आंसर इज इक्वल टू 1. यानी अगर यहाँ पे 3 की पावर x होता देन वी कैन एबल टू राइट 3 एक्सपोनेंट 0. अगर यहाँ 4 की पावर 2 होता x होता देन वी कैन एबल टू राइट 1 इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट 0. एनी वेरिएबल whose exponent 0 equal to 1. That's good. So what is the value of x? Because base is same, so exponent also same, so x is equal to 0. एक वैल्यू x की हमारे पास ये आ गई. Now so the next one here also the y is equal to 2 exponent x is equal to 1 over 8. राइट हैंड साइड में 2 का एक्सपोनेंट बनाना है. हाउ? गुड. व्हाट्स 8? मीन मल्टीप्लाई 8 itself, any number that multiply itself, then we will get the answer 8. One thing I told you that it must be the exponent of 2. नहीं, 2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करते जाओ कि जब तक 8 ना आए. सो 2 2s are 4, 2 होगी पावर. दोबारा करते हैं एक और 2 3 हो गए. 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 2s are 8. It means that 2 multiply itself 3 times. मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि जब आप 2 multiply by 2 करते हैं तो आंसर क्या आता है? 4. और 4 multiply जब 2 करेंगे तो आंसर आया हमारे पास 8. राइट? तो we can able to write 2 exponent x is equal to 1 over 2 exponent 3. But there is one confusion still. What is that? इधर 2 क्या है न्यूमरेटर में, वहां पे 2 डिनोमिनेटर. सो हाउ टू सॉल्व? मीन हमें सेम न्यूमरेटर में ही चाहिए. गुड. सो हाउ टू मेक इट्स न्यूमरेटर? द लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम. सो व्हेन आई विल मेक इट न्यूमरेटर, सो 2 एक्सपोनेंट -3. इट मींस दैट व्हेन आपके पास वो चेंज होता है न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, तो उसके एक्सपोनेंट की साइन क्या हो जाती है? चेंज. गुड. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -3. सो इन आवर सॉल्यूशन सेट व्हाट वी विल राइट इन आवर सॉल्यूशन सेट? s and s solution set. First value what we will get? that 0. And the second value what we will find? -3. And very good. That is our answer. Solution set. Hope all of you clear. Now 12 and 14. That's your assignment. Student, time of assignment start. I didn't remove that. Question number 12. Sorry, before that I was thinking about the question number 13, but 13 is this one and 14. Group A will solve question number 14 and Group B solve question number 13. Group B की मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, but Group A माशाल्लाह already Group A है, they can do themselves. Group B, so first of all try to rearrange like that, then it will be easy for you. There are 2 steps. First you will write that 3 exponent 2x. Here 2 exponent 2x plus 1 था, तो हमने क्या लिखा था? 2 की पावर 2x and multiply by 2 because its power is 1. Now multiply कर देंगे हम 3. इधर exponent 1 था तो we will write only 2, but here its exponent 2 है तो we have to write here 2. Mean base same power add, so reverse procedure. add था तो हमने इसको separate terms बना लिया. राइट?
इसको शिफ्ट करके लाते हैं इस तरफ तो क्या हो जाएगा माइनस 12 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0। ख्याल रहे इसकी पावर को चेंज नहीं करना। इट्स पावर चेंज व्हेन इट्स बिकम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। गुड। सो व्हाट विल बिकम लाइक दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 exponent 2x and here minus 12 multiply 3 exponent x plus 3 equal to 0। यहां हमने क्या लेट किया था 2 exponent x is equal to y। इधर क्या लेट करना पड़ेगा हमें that is equation number 1। let 3 exponent x is equal to y। गुड। सो आफ्टर दैट 3 एक्सपोनेंट y तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। गुड। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। सो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 व्हाट विल बिकम 9 y स्क्वायर माइनस 12 y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब इसको y की वैल्यू फाइंड करके दोबारा हम इसको सॉल्व करेंगे जैसे पिछला सवाल किया था। ए ग्रुप डू यू नीड हेल्प? चलें आई डू वन स्टेप फॉर यू। अभी क्या याद करेंगे? सो व्हाट इज द वन स्टेप दैट यू कैन एबल टू राइट दैट 2 एक्सपोनेंट x प्लस 64 इट्स पावर मेक पॉजिटिव लाइक 1 ओवर 2 एक्सपोनेंट x माइनस 20। राइट। बी ग्रुप ने भी करना है और एक बी ग्रुप बाद में इसको भी करेगा। ठीक है। सो हियर व्हाट वी विल लेट दैट वन। इधर तो आपके पास था 3 की पावर आपके पास x एंड x स्क्वायर इसको कर लिया। इधर क्या करेंगे अब हम लेट हमने कर लिया दैट इज इक्वेशन नंबर 1। लेट 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू y। इसी को ही लेट करेंगे हम दैट इज इक्वेशन नंबर 2। So when we assume it is equal to let 2 exponent x is equal to y तो फिर क्या करेंगे हम just putting because there is no need to write x square automatically होगा। how 2 exponent x is equal to y plus 64 over y because here exponent in denominator and minus 20 equal to 0। how to make quadratic equation? good। removing its denominator। and how to remove its denominator? by taking its LCM। good। so what's its LCM? y। so multiply by y on both sides। right। here y into y square plus 64y over y minus 20y equal to 0। इधर y से क्या हो जाएगा कैंसल। जस्ट रीअरेंज आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जी। रीअरेंज करेंगे क्या आ जाएगा पहली टर्म हमारे पास आ जाएगी y स्क्वायर सेकेंड टर्म y वाली होनी चाहिए। राइट। सो माइनस 20 y प्लस 64 equal to 0। now which method you want to use that quadratic formula factorization or completing squares up to you। find the value of y first then you will find the value of y then after that again solving here like question number 12 we already solved। right। so after that type 4 is also end। बस एक टाइप हमारे पास बच गया type 5 that 1.3 will be end। okay। solve it। take care। thank you and Allah Hafiz।